Good morning, everyone. So, welcome to the 10th session of this winter internship program. And today we'll be just discussing the complete project overview on any of the project, that how we can execute it, means what are the things that needs to be done and what are the sequence in which that work needs to be done. So ये सारी चीजों को आज के सेशन में देखेंगे. As of now, you have just seen the basics of HVAC industry, the hierarchy of HVAC industry. Then you have seen classification and categories of air conditioning. You have also seen the psychometric part, that how exactly what is psychometric, what are the psychometric properties. You have also seen different psychometric processes. You have seen the use of psychometric software, that is by Carrier. Then we have moved towards the heat load calculations, that is your basics of heat load calculations. Through After that, we have also seen the heat load calculation through E20 seat, and we have just seen the overview of HAB software. After that, you have seen basics of AutoCAD, followed by ducting and piping drafting on AutoCAD. And then in the last session, you have seen that how the building modeling will be done with the help of Revit software. So all these things that we have covered in the 9 consecutive sessions that we have. And today it is the last session of this winter internship program. So today we'll be just trying to compile all these things that we have studied in the entire training program. Now coming to the point, that since we are at the last of this we are at the very end of this winter intensive program, although we have one more session on Monday, that is for the complete doubt session is there. So there you can come up with all your doubts that you have in your mind. Definitely we myself and my team will just try to resolve all your queries over there. Okay, so today if you have any query, you can also go to chat box and revert me with your queries. Each and everything, the content study materials that has been shared in the Telegram channel. So from there you can get all the information. Okay, so let's start the session. If you have any query, you can just go to chat box. Basic AutoCAD you must know. Prior to that, then only you can go for the drawing part. Unless until अगर आपको basic CAD नहीं आता, then you will not be able to go for the CAD part. Okay. Okay, so let me start. So in today's session, we'll be just having an overview of entire project, at what needs to be done and how it needs to be done. So let's start with today's session. So before designing, once the project it is in concept stage, जब project कोई भी concept stage में होता है, so from there it is a the inception of any project start. किसी भी project का inception वहीं से start होता है. So let us try to understand from there that, for example, there is one project is there. So first thing that needs to be done, it is your project design. Prior to that, prior to project design, the first thing that needs to be done, it is your building survey. Building survey. What is building survey? Anyone have any idea? The first thing that is needs to be done prior to the design. This is basically your collection of all collection of all necessary information. Collection of all necessary information required for
all necessary information informations or data required for heat load calculation. So this is the first stage, that what we will do. So no, these details are required for the load calculation. ये जो डिटेल है लोड कैलकुलेशन के लिए ही रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, आफ्टर दैट वी विल डू द लोड कैलकुलेशन. इसके बाद जो हम लोग करेंगे दैट इज योर लोड कैलकुलेशन, that we call it as heat load calculation. And what is the in this heat load calculation, that is process through which heating or cooling capacity is determined. Process through which heating and cooling capacity is determined. Heating and cooling capacity is determined. It can be done by, there are two options by which this heat load calculation it can be done. It can be done by either E20 sheet, so this is also one option, and second option, that is by HAP software. So या तो ये हम E20 sheet से करेंगे या तो HAP software के थ्रू करेंगे. So that is your heat load calculation. After that what we will do, इसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, that is basically your equipment selection part. इसके बाद जो हम लोग करेंगे that is your equipment selection part. Equipment in equipment selection we exactly have multiple options. इसको आप समझे थोड़ा सा. What I'm trying to do, I'm just trying to link all the things that we have studied so far. So equipment selection का part है, that is basically the selection of all major equipments that we would be using. जो भी equipments हम लोग use करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ discuss करेंगे. Here we have an option of two things. यहाँ पे हमारे पास दो options निकल के आते हैं. Here we have an option of two things. Number one, direct refrigeration. This is basically your system. So here first of all we would be just doing the system selection. So this is basically your system selection. So we have an option of direct refrigeration. And we have an option of indirect refrigeration. Indirect
रेफ्रिजरेशन, हमारे पास दो ऑप्शन दिख जाएगा, एक तो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन, एक इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन का। अब डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आएंगे, लेट अस सी हियर। ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर जो इक्विपमेंट्स आएंगे, लेट अस सी हियर the equipments that we can have here in direct refrigeration. It can be your window AC, then we have non-ductable split AC, ductable split AC, package AC, पैकेज एसी से पहले we can write multiple split AC, multiple split AC, that we call it as VRV or VRF, इसे VRV और VRF के नाम से कहते हैं। then we have package AC and condensing unit, एंड PAC, प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग। सो ये सारे वो यूनिट्स हैं जो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर आते हैं। इन डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या क्या आता है, इट इज ऑल एयर सिस्टम, ऑल वाटर सिस्टम एंड एयर वाटर सिस्टम। सो इसके अंदर जो मेजर सिलेक्शन होगा, इट विल बी योर चिलर सिलेक्शन। So it includes your chiller, AHU, FCU, pump, cooling tower, humidifier, dehumidifier, fan सिलेक्शन। सो इतने सारे यूनिट्स का सिलेक्शन। सो ये यूनिट्स का सिलेक्शन जो है, FCU, इट इज योर फैन कॉइल यूनिट। You can get the certificates once after the program ends, so that you can discuss with the management. Okay. So ये ऑप्शंस हमारे पास हो गया कि इक्विपमेंट सिलेक्शंस हो जाएगा। वंस द इक्विपमेंट सिलेक्शन इज डन, दैट विच इक्विपमेंट्स, वेदर वी आर गोइंग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट वी कैन हैव हियर। इट इज योर, इसके आगे जो होगा, दैट इज योर डक्ट डिजाइन। So let us see here the next part that we have, that is the duct design. So इसके अंदर what are the things that we will be discussing in duct design? Basically it includes what? It includes your duct sizing by duct sizer, it includes duct design followed by duct design followed by its subsequent drawing. Followed by subsequent drawing.
सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजाइन हम करेंगे। डक्ट डिजाइन के अंदर duct sizing will be there, static pressure calculation will be there, gauge selection will be there. So all these things it will be done, and after that its drawing will be done. It can be in AutoCAD or it can be in Revit. ठीक है. Duct sheets are made up of GI. Generally, duct sheets are made up of GI sheet, galvanized iron with a GSM coating of 120 GSM. Minimum coating it is 120 GSM as per IS 277. IS 277 Bureau of Indian Standard has given one standard according to which the minimum galvanization coating it must be 120 GSM. If it is agreed with the client, so that you can see in that particular standard that what will be the coating of that. Okay. It ducting material it can be of SS also, stainless steel also, but generally it is GI is preferred over there. So after equipment selection, it is your duct design followed by its subsequent drawing also. Let us move ahead and see the next part that we have, that is basically your pipe design. Pipe designing, this will include, it includes your pipe design followed by its drawing. It includes pipe design. It can be your refrigerant as well as chill water. It can be refrigerant or chilled water, followed by its subsequent drawing. Followed by subsequent drawings. So once the piping is done, then after that what we will do, we will prepare a BOQ. So BOQ, then we will do a preparation of BOQ, that is your preparation of bill of quantity. Preparation of, anyone have any idea what is BOQ? Preparation of bill of quantity followed by anyone have any idea what is BOQ? What is bill of quantity? Bill of quantity, it is basically that means in the equipment selection we have just analyzed at which equipment will be used, but in BOQ it is something that is that how much quantity of that product it will be used. So that is basically your BOQ, that is bill of quantity. इसे हम bill of quantity कहते हैं. कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है वो आपने इक्विपमेंट सिलेक्शन में डिसाइड किया, बट उसकी क्वांटिटी क्या लग रही है. फॉर एग्जांपल इफ डक्टिंग इट इज यूज्ड, GI sheet is used, so how much GI sheet it will be used. So that is the quantification. This is the quantification of all products. So that is basically your quantification of all major products. Quantification of all major products. Okay, after that we will proceed with the electrical options, that is your preparation of electrical load list. Or we can write electrical load.
electrical load list. So in this will be basically so that is your total electrical load of the project. Determination of total electrical load of total electrical load of project. इसके बिहाफ पे ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन विल बी डन. इलेक्ट्रिक HVAC वाले ने अपना इलेक्ट्रिकल लोड दे दिया. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, वंस वी गॉट ऑल द लोड, उसके बाद जो क्लाइंट है वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन करेगा. एंड आफ्टर दैट इट विल बी योर final one, that is basically your technical specification. That is basically technical specification of every product. Of products, ये डिफाइन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट लगेगा वो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट विल बी द अप्रोच इन दिस. इसी सीक्वेंस में किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है. इट कंटेन्स अ डिटेल्ड specification of all major products. All major products, and this will be the sequence of operation. Okay, तो इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है. लेट मी स्टार्ट विद दिस. एक प्रोजेक्ट को मैं क्या करता हूँ, लेट मी स्टार्ट टू शो यू कि एक प्रोजेक्ट को मैं हीट लोड कैलकुलेशन आपको E20 शीट पे दिखाता हूँ. उसके बाद आई वुड बी जस्ट शोइंग यू हाउ द डक्ट डिजाइनिंग विल बी डन. देन उसके ऊपर कैसे पाइपिंग डिजाइन किया गया, उसका BOQ कैसे डिटरमाइन किया गया, ऑल दिस थिंग्स दैट आई विल बी ट्राइंग टू शो यू. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Meantime, if you have any query, you can ask your queries here. We will just try to revert you all your queries that you have in your mind. So there are some queries that I'm just trying to repeat you. Sir, what is the name of the process that we have just discussed? Is this inspection? Definitely, you would be the team shall revert you with the all the detail for the job assistance based upon your performance, based upon your skills. The team shall assist you in that. Okay, just hold on for one moment.
Let me open the file and then I shall discuss you. See, we will start with the, as I said, कि हम एक प्रोजेक्ट को एक बार ओवरव्यू करते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट पे डिजाइन किया जाता है। तो द फर्स्ट थिंग इट इज योर हीट लोड कैलकुलेशन। बिल्डिंग सर्वे तो क्या हीट लोड कैलकुलेशन से पहले का पार्ट है। सो नो these मिस्टर कुलदीप वर्मा, these आर द स्टेप्स बाय विच किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन मतलब मैंने एक पूरा एक फ्लो बना के आपको बताया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाता है। ओके, let us see here. So this is the Excel sheet जहाँ पे आपको heat load calculation किया गया है। This is the summary sheet that you have to do, and for this we have already shared 4 videos, 4 links हमने already share किया हुआ है। heat load calculation के video के description box में it was there that how we can do the there are 2 videos are there that how we can do the heat load calculation on E20 sheet that we have already shared with you. 2 videos are there, part 1 and part 2. So इसमें multiple rooms के लिए है, इसमें आपको ये करना है and this will be your assignment, so just be attentive. Okay, let me show you the projects also. उस project को भी मैं आपको दिखा देता हूँ and that you will receive in your mail ID. Just give me a moment to show you that project. See here, this one it will be your first project. That is there are 4 reasons are there in this one. It is your classroom one. Let me show you, let me highlight this. The 4 areas are there. This is your classroom one, this one it is your classroom two, this is your faculty room, this is your entrance lobby, this one it is your toilet, and this is your pantry. So इसमें से 4 rooms का load calculation करना है. This is room number 1, room number 2, this is your faculty room, and this is your entrance lobby. So all these 4 rooms that you have to do the heat load calculation. एक room ये हो गया. So इसी पे मैं I will just show you on the screen also that how the calculation it is being done on this. For this there is one more detail is there. एक डिटेल भी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड. वो डिटेल भी मैं आपको शो करता हूँ. So this is your project detail. So this is your project detail. So professional training center, location, all these things are there. Ordinary glass. So this type of details are there. For entire detail is there for the project. Okay.
Everything, every detail you will receive in mail, so don't worry for that. So based upon all these things, you have to prepare a summary sheet like this. आपको इस तरीके से एक summary sheet prepare करना है, और हीट लोड कैलकुलेशन इस तरीके से इंडिविजुअली रूम का आप करेंगे. ये ग्लास के थ्रू हीट है, वॉल के थ्रू है, transmission gain except wall and roof, then internal heat gain, outside air, latent heat. So all these things that you have. Okay, let's move ahead. Once we are done with that, अगर ये हो जाता है तो after that what we have to do? Project sequence में मैं discuss कर रहा हूँ. This will not be a part of your assignment that you have to do the all these things. जो भी assignment होगा आपका, that it will be specifically mentioned in the mail that what you have to do. But ये project यही होगा, इसी project के ऊपर आपको जो भी करना है, that we will share with you. Now let's move ahead with the today's context जो मैं आज discuss कर रहा हूँ यहाँ पे. What I was discussing कि suppose this heat load calculation is done in E20 sheet or HAP software. इनमें से किसी के ऊपर हमने ये कर लिया. Okay, so after that then equipment selection. For example, अगर हम indirect में जाते हैं, then we have to go with the option of chiller and AHU and FCU, all these things. ये options को देखना होगा. तो let us see one drawing also, जहाँ पे चिल वाटर पाइपिंग का प्रोजेक्ट 1 के ऊपर एक सैंपल ड्राइंग है. सो दैट विल गिव यू अ मीन टाइम once the file it is being opened. इसके बाद हमें क्या करना है? After that we have to do the duct designing and pipe designing. इसके बाद हमें duct designing करना है और pipe designing करना है. तो let us see. See the drawing. Just give me a moment. See, this is the drawing. So I believe it is visible. So this way you have to show this way you have to show on your that this is your chiller, and from here the chill water piping is there, it is going downward. So this is your terrace plan. So from terrace plan it is again going to the your floor plan pe aa raha. After that you would be having a in this way the AHUs are being installed, and in this way this is your AHU, and then this is the head piping. It is the chill water supply line and chill water return line is there, along with all the accessories. As you can, if I'm zooming it, you can see pressure gauge, wire strainer, balancing, temperature gauge, all these things are there. So similarly आपने क्या किया, सारे HUs को connect कर दिया, इधर FCUs को connect कर दिया, and then with the help of that you can just do ये this is something which is related with the chill water piping. ये chill water piping पे हमने कर दिया, ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट जब जैसे ही आपने ये कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हेड लॉस कैलकुलेशन करेंगे. सो लेट मी शो यू वन कैलकुलेशन ऑन द हेड लॉस कैलकुलेशन. किस तरीके से आप करेंगे हेड लॉस कैलकुलेशन.
So as you have seen here, यहाँ पे अभी आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल as you are seeing here, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. अगर आप देखेंगे वी कैन जस्ट डू द नंबरिंग हेयर आल्सो, एंड वंस वी डिवाइड द एंटायर पाइपिंग इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, तो इसी के बेसिस पे हम हेड लॉस कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से. लेट मी शो यू दैट कैलकुलेशन फर्स्ट. दिस इज योर हेड लॉस कैलकुलेशन के जो भी सेक्शंस हैं, सेक्शन आप इस तरह से, सेक्शन 1 से 2 में दिस इज फॉर द स्ट्रेट पाइप गेट वॉल्व. सो पाइपिंग के लिए भी हमने निकाल लिया और एक्सेसरीज के लिए भी हमने निकाल लिया. देन अगेन इसी तरीके से पूरे नेटवर्क का हम, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. नाउ आई बिलीव इट इज विजिबल. सो हेड लॉस कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें होती हैं. एक तो हेड लॉस इन द पाइप एंड हेड लॉस इन द एक्सेसरीज. हेड लॉस इन द पाइप दैट इट इज बीइंग शोन. किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, दैट इज एफ इंटू एल डिवाइड बाय 100, फ्रिक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बाय 100 करेंगे तो हमें पाइप का मिल जाएगा. उसके बाद क्या है, इसका हेड लॉस निकालने के लिए देयर विल बी इक्विवेलेंट लेंथ टू पाइप फॉर द एक्सेसरीज. इसी तरीके से पूरे नेटवर्क का हम हेड लॉस निकालेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू द समेशन. इसका समेशन करेंगे. सो इट विल बी योर टोटल हेड लॉस. इस टोटल हेड लॉस में व्हाट वी विल डू in this entire total head loss, we will just add the head loss of the accessories, add the head loss of the equipment का head loss को add करेंगे तो हमें total head loss मिल जाएगा. accordingly the pump selection will be done. so ये आपका हो गया, that is your head loss calculation से related. next जो आएगा that is related with something related with the duct designing part. so duct designing जो part है उसके लिए let us see one calculation के how you can do the calculation here. that is basically your static pressure calculation. as you can see here, इस तरीके से हम लोग करेंगे, एक सीट बनाएंगे. जो भी सेक्शन डक्टिंग के आई थिंक इट इज विजिबल. डक्टिंग के एंटायर डक्टिंग को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से एक एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकाल लेंगे. देन वी विल कैलकुलेट द इंटरनल स्टैटिक प्रेशर. एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है. देन इंटरनल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे. उसके बाद टोटल स्टैटिक प्रेशर हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे. सो डिफरेंट कैलकुलेशंस आर देयर बेस्ड अपॉन दैट. इसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा एक क्वांटिटी कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी अभी इस प्रोजेक्ट में यूज हुआ है. दैट इज बेसिकली अ बीओक्यू. आपने चिलर यूज किया 1, 4 एचयू यूज किए, 2 एक्सयू यूज किए, पंप्स यूज किए 1, उससे प्राइमरी पंप. उसके बाद डक्टिंग से रिलेटेड है, ये डक्टिंग factory fabricated ducts you have used, site fabricated ducts you have used, insulation है, then acoustic flexible ducting, grill, diffuser, fire damper, VCD, कॉलर डैम्पर, कैनवास कनेक्शन. और इसके बाद जो है चिल वाटर पाइपिंग का पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर चिल वाटर पाइपिंग है, देन इंसुलेशन, देन we have different accessories such as gate valve, Y stainer, check valve, then ball valve is there. सो ऑल दिस थिंग्स, इन सारी चीजों को क्लब करके जब हम एक क्वांटिफिकेशन में बना देंगे, दैट इज बेसिकली आवर बिल ऑफ क्वांटिटी. उसे ही हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. तो इसी सीक्वेंस में हमें किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसी तरीके से होगा. सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस टुडेज प्रोग्राम. if you have any query you can ask, because in short I can only just give you a glimpse of what we can do in the project. Okay, now coming to your assignment part, it will be related. Let me clear one thing, that assignment, it is mandatory for all those who wants to participate in, for assignment it is mandatory for all those who wants to participate in the competition, because there is one there will be a prize for top 3 performer. So for that we will be giving some assignment. First one, the criteria uh, for the best performer, it will be your attendance, it will be your class performance, class interactions. We have the record that how many questions has been put on from your side for during the session. Then it is your assignment, and final one, it is your, there will be a test, online test will be there that you need to give. So among that, the top 3 performers from all over India, they would be just, yeah, rewarded with a prize worth some
1 lakh rupees, around 1 lakh rupees. Okay, so assignment, it will be certificates will be given to each and everyone. Don't worry for that. Assignment, you need to submit it over mail. And one more thing, that assignment, it will be related with heat load calculation, and it will be related with your psychometric. So that you need to do it from your side. Softwares have been provided by us in the Telegram channel. And one more thing, if you have any query related to the full because this in short training, in a very short span of time of around 15 days, we'll not be able to complete the entire things which is being required at the industrial level. So if you want to if you want to have a discussion for the full term training, which is around 3 months, so for that you can reach to us. The support number I am writing you, it will be 911. You can contact this one, 911 91101 47126. So this is the contact number. You can contact for any detail. Contact for any detail. And what we can do, we can just all the basic requirements, it will be provided. Mr. Geet Kaur, we didn't understand what exactly you want to ask. For contact for any details for this particular number, this is the helpline number. Helpline number. You can contact here for any job assistance, for any full-term training, or because we do train on the live projects also. Physical site के ऊपर भी हम training देते हैं. Recently we are involved in the HVAC designing and installation of one COVID care hospital also, जिसे अभी हमने रिसेंटली डिजाइन किया है और अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पे हमारे ट्रेनिंग ऑन साइट जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से साइट पे इंस्टॉलेशन वर्क इज गोइंग ऑन. ओके, no, there is no, Mr. Geet Kaur, there is no training which will be starting from 10th of January. Through the mail you have to submit all your, will be communicating with mail only. Okay, now so this is your helpline number, so you can reach here for any of the query. Let me recall the number once again. It will be 91101472126. Right. So let's stop here. If on one more session on Monday, we'll be having a complete doubt session, जहाँ पे आप अपने डाउट्स अभी तक आप रिकॉल कर ले सारे के सारे 10 सेशंस को, और you just note it down all your queries. We'll be discussing in live with all your doubts which is related with the training program. Be specific कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप अपनी क्वेरीज को नोट डाउन करके रखें. एनीथिंग which is related with your career, you can ask that queries also about your professional life, about your skill development, so that things you can ask. Okay, me and my team shall be ready for that. Okay, one more thing that I personally request from your side, that you can just go to Google and just write a review for us, that how you exactly feel for this entire training program. Okay, so that is basically that will keep us motivated to do better in the upcoming seminars. Okay, I will just drop you a link also, so there you can just go there and write a review, whatever you feel that okay. Yeah,
For any detail, Mr. Tausif Ahmed, you can ask this number. He will just revert you. Okay, and we will just give me a moment. I will just share you the link. Just wait a moment. So you can use this link. This is the link, and that you can use it. And I believe this intensive program, it is beneficial for you. Today's what we have discussed in today's session, let me conclude it now. We have just discussed this, that we what are the things, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है. वी स्टार्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग सर्वे में वो सारे डेटाज और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं जो भी हमारे हीट लोड कैलकुलेशन के लिए नेसेसरी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. आफ्टर दैट हम हीट लोड कैलकुलेशन करेंगे. इट विल बी डन फ्रॉम either by E20 sheet or different softwares. The one most popular software that we'll be using, that is your HAB software. उसके बाद इक्विपमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड पार्ट है. वहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन में जाना है या इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन में जाना है. डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन वी हैव विंडो एसी, स्प्लिट एसी, डक्टेबल, नॉन डक्टेबल, पैकेज एसी, वीआरबी, वीआरएफ, ऑल दिस थिंग्स वी हैव. देन इनडायरेक्ट वी हैव चिलर. सो बेसिकली इनडायरेक्ट क्या है, वही हमारा चिल वाटर सिस्टम होता है और मेजर जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग इसी के अंदर आता है. सो दैट इज बेसिकली योर इक्विपमेंट सिलेक्शन पार्ट. आफ्टर दैट वी विल डू द डक्ट डिजाइनिंग, जहां पे हम डक्ट डिजाइन करते हैं. डिजाइन और ड्राइंग दोनों इसमें कवर होगा. फिर देन पाइप डिजाइनिंग है. सो पाइप का डिजाइनिंग, पाइप डाया, हेड लॉस कैलकुलेशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. उसके बाद हम बीओक्यू बनाएंगे, दैट इज योर बिल ऑफ क्वांटिटी. कौन कौन से प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है. देन इलेक्ट्रिकल लोड लिस्ट इज देयर एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. इलेक्ट्रिकल लोड लिस्ट बनाएंगे जहां पे हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल लोड लिस्ट है, दैट वी विल डिसाइड. एंड देन आफ्टर दैट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पूरे प्रोजेक्ट का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड in today's session. Okay, so what I believe, you can just use this link to write a review for us, which will be helpful for us to keep us motivated to do better for the upcoming engineers, the future engineers for us. Okay, so that's all for today from my side, and see you all in Monday's session. There we would be having a live doubt session. So it will be you will receive the assignment by today midnight. Okay, thank you, and thanks a lot for your time.